Hello, welcome back to the channel Awesome Learning. The next topic that we are going to do in the chapter photosynthesis is photorespiration. So, as the name you see, photo means light and respiration is breaking down of food into simpler substances to get energy. This is what is respiration. So, but here, what is photorespiration? In Kelvin pathway, we just did a video on Kelvin pathway. RUBP combines with CO2, right? RUBP combines with CO2 in presence of enzyme Rubisco to give two molecules of 3 carbon phosphoglyceric acid, right? This was what we are getting. Okay, so 2 molecules of PGA we are getting. So active site of Rubisco can bind to CO2 and O2, hence the name. Why we are calling as Rubisco? Because it can bind to both CO2 and O2. Rubisco has greater affinity for carbon dioxide but than for O2. अब हम यहाँ इस second point में what we are saying that Rubisco has affinity or love for both CO2 and O2. मतलब वो दोनों के साथ जाना पसंद करता है, वो दोनों के साथ बाइंड होना पसंद करता है, पर ज्यादा प्यार किसको करता है? वो CO2। अगर हम कंपैरिजन करें CO2 और O2 के बीच में, तो ग्रेटर एफिनिटी इज विद CO2 rather than O2. So this binding is competitive, you know. It is always competitive. If Rubisco is given a choice, if we give it a choice कि आप किसके साथ जाना पसंद करोगे, CO2 के साथ या O2 के साथ, तो जब चॉइस दे रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं जाएगा CO2 के साथ? बिकॉज उसकी एफिनिटी CO2 के साथ ज्यादा है, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट होती है। तो relative concentration of O2 and CO2 determines which one will bind to the enzyme, of course. तो अब क्योंकि वो दोनों ही उसके साथ बाइंड होते हैं, इसलिए दोनों का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है कि कौन बाइंड होगा। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो दौड़ेगा और वो जाके रुबिस्को के साथ बाइंड हो जाएगा, राइट? So in C3 plants, some oxygen bind to Rubisco. Hence CO2 fixation is decreased. क्योंकि ऑक्सीजन ने, मान लो रुबिस्को के पास 4 कुर्सियां हैं, तो ऑक्सीजन ने 2 कुर्सियां या 3 कुर्सियां घेर रखी हैं पहले से, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी जगह बचती है? कम जगह बचती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ बाइंड हो चुका है तो। Here RUBP binds with oxygen to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. This pathway is called photophosphorylation. So when RUBP binds with oxygen, you get one molecule of phosphoglycerate and one molecule of phosphoglycolate, and ये जो pathway है जिसमें RUBP binds with oxygen, this pathway is called photorespiration. In this pathway there is no synthesis of sugar. यहाँ पर कोई शुगर नहीं बनी। CO2 के साथ जुड़ता, अगर यही RUBP CO2 के साथ जुड़ता तो हमें क्या मिलता? प्रोडक्ट, शुगर मिलती, ठीक है। लेकिन अगर RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, नो सिंथेसिस ऑफ ATP, नो सिंथेसिस ऑफ NADPH, कुछ भी नहीं, नथिंग इज सिंथेसाइज्ड। हेंस इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, कोई फायदा ही नहीं हुआ, ना शुगर बनी, यानी ना सोर्स ऑफ फूड बना, ना एनर्जी मिली, ना NADPH मिला, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये वेस्टफुल प्रोसेस है। रादर इट कॉजेज उल्टा, ये हमारी एनर्जी खर्च कर रहा है। रिलीज ऑफ CO2 बाय यूजिंग ATP, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जब CO2 ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर CO2 रिलीज होता है तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, बन कुछ नहीं रही। तो क्योंकि हमारे जेब से कुछ जा रहा है और हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो वी कंसिडर इट ए wasteful process. Okay, photorespiration children in C4 plants. This was photorespiration in C3.
Now let's see photorespiration in C4. Photorespiration does not occur because they can increase CO2 concentration at the enzyme site. This takes place when C4 acid from mesophyll is broken down into the bundle sheath to release CO2. ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब C4 एसिड मेसोफिल से बंडल शीट में जाना शुरू होता है और फिर ये ब्रेक डाउन होता है. जब ये ब्रेक डाउन होता है तो यू आर गेटिंग टू थिंग्स, वन इज CO2 एंड द अदर इज C3 एसिड. तो इस टाइम पे जब ब्रेक डाउन हो रहा है, this is the time when photorespiration occurs in the C4 plants. Okay, because I hope this is now clear to you. This minimizes the oxygenase activity of rubisco. तो rubisco का oxygenation activity कम हो जाता है. Due to lack of photorespiration, due to the lack photorespiration, productivity and yields are better in C4 plants. In addition, these plants show tolerance to higher temperatures. तो क्योंकि ये कम हो जाता है, minimize the oxygenase activity, तो जो photorespiration होना possible नहीं है ना. एंड क्योंकि फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं होती, तो C4 प्लांट्स जो हैं दे गेट बेनिफिटेड. एंड वन मोर थिंग इज दे कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर्स. Right? So children, this is the difference between, all of you will write down this difference in your registers, difference between C3 and C4 plants. Photosynthesis occurs in mesophyll cells. In C4 it occurs in mesophyll and bundle sheath cells. Cran's anatomy is absent, it is present. RUBP is the primary acceptor, here PEP is the primary acceptor. First compound we are getting is 3-PGA, 2 molecules. First compound here we are getting OAA, 4 molecules. Chloroplasts are of only one type. Here they are demorphic, that is mesophyll mein it is granule type, and in bundle sheath it is an arginal type. Photorespiration loss is high here and it is either absent or negligible. Optimum temperature for photosynthesis is 25. Here it is 35 to 45. हम बोलते हैं ना, इसीलिए ये ज़्यादा ये गर्म इलाकों में पाए जाते हैं C4 plants. So photosynthetically less efficient and productivity low. Photosynthetically more efficient and productivity is high. So this is all about C3 and C4 plants.